जी स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी राइट नाउ? अब आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लास फर्स्ट ईयर, अभी आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी राइट नाउ? जी अब आवाज आ रही है आप लोगों को क्लास? ओके, नाउ यू कैन हियर मी, ओके फाइन। शुक्र है कि अब आवाज आ गई आप लोगों को। आ रही है ना सही से? Okay, thank you, Sanaji, telling me that you can hear me right now. Okay, fine, let's start the lecture today. We have learned in our previous lecture about about the versus village life and city life. What we have done in city life and what we have done in village life. Village life, we have learned that about life in a big city. So, where you want to live permanent? Which life is you like most? Is it village life or is it सिटी लाइफ? जी सिटी लाइफ जो है वो मजे की होती है आप लोगों के लिए, या फिर ये वाली लाइफ जो है ये वाली लाइफ मजे की होती है? जी life in a big city. A big city is a product of modern civilization. Life in a big city is very quick, fast and restless. Okay, तो सब काम से काम रखते हैं। हाँ, सिटी लाइफ में सब काम से काम रखते हैं। हाई काम होती सिटी लाइफ में इतने हैं तो क्या करें फिर, काम खत्म ही नहीं होते सारा दिन सिटी लाइफ में। अच्छा, विलेज लाइफ मजे की होती है। विलेज लाइफ में क्या मजा होता है बताएंगी आप? क्या मजा अच्छा लगता है विलेज लाइफ में? अच्छा करते हैं ना, सब काम से काम रखते हैं, ऐसे इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है एक दूसरे के मामलात में, कि नहीं? Okay. City offers many facilities and comforts for its inhabitants. क्या कहते हैं कि a big city is a product of modern civilization. Life in a big city is very quick, fast, and restless. It offers many facilities and comforts in its inhabitants. A city offers numberless opportunities of jobs and the first benefit for the employee to live in the city is that there are numberless opportunities and jobs and employments. Great thinkers, poets, scientists live in a big cities. A big city offers to its inhabitants big shopping, schools, and hospitals. A big city is not without its shortcomings. Certainly, most of the students want to live in village. Village life is more enjoyable than city life for the students. Nisaki, where you want to live in? जी ओके, a big city is the product of modern civilization. Modern civilization की प्रोडक्ट होती है। It represents modern civilization with all its charm. अपने पूरे काम के साथ होती है वाइस, लेकिन जहाँ पर काम होता है वहां पर के इवल्स भी होती हैं, वाइसेस भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। लाइफ इन अ बिग सिटी इज वेरी क्विक, बहुत ज्यादा तेज होती है, फास्ट एंड रेस्टलेस। रेस्टलेस बहुत ज्यादा है अपना सिटी लाइफ जो है।
The tempo of life is very high. जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है. The people are always in a hurry. और लोग बहुत जल्दी में रहते हैं. There is noise and uproar. शोर होता है, शोर शराबा होता है everywhere, हर जगह पर. The bazaars and the markets bustle with activity. हर वक्त फुल रौनक रहते हैं. The city streets are crowded. City streets भी crowded होती हैं with people, लोगों के साथ. There are big shops होती हैं, stores होते हैं, supermarkets होती हैं, big cities होती हैं. They're always full of customers. Customers से भरी होती हैं सारी. People buy and sell things here. और लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें खरीदते और लेन देन करते हैं. जी, read the first 5 or 6 outlines and first passage of the essay, and if you want to ask anything else, so tell me. If you want any difficulty, any meaning do you want to ask, or any sentence do you want to ask, then इसको पढ़ें. फर्स्ट पैसेज को 6 outlines को पूछे क्वेश्चन जो पूछना है मेरे से. ओके. जी स्टूडेंट्स, ठीक है, पढ़ लिया इतना. जी तो सही आवाज आ रही है आपको. कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, तो उसका भी काफी नॉइज बिहाइंड ऑफ मी. जी आवाज आ रही है अब आपको मेरी?
जी, पढ़ लिया था आप लोगों ने जितना मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था। डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एनीथिंग एल्स? ओके जी, क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं सिटी। Okay, career, fine. A city offers many facilities and comforts to its inhabitants. The most important aspect of city life is that it is nonetheless transportation and communication facilities for the citizens. People can move from one place to another without any let or hindrance. They enjoy the facility of telephone, telex, and the newspaper, which keep them well informed about the daily happenings of newspaper, which keep them informed about the daily happenings of the world. A city has big trade centers from where people can get all things to their need and comfort. Of course, they are telling about the facilities in the city side, and city, of course, are the big and facilitated, so people can avail all kind of facilities about trade center, about the things they want to purchase, about the development of the city they can achieve, and they can get these all things very easily, and they can enjoy all the facilities very easily, not very far away. If you are living in a city, these all kind of facilities are not very far away. Okay.
जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो। जी आवाज आ रही है मेरी? Voice is clear. Thank you, Ira, that you tell me that voice is clear. Okay, let's start. The next. Yes, ma'am, आवाज आ रही है. Okay, thank you. कितना मजा है आपको सामने बैठे हो, फिर मैं आपको एक क्लास ले रही हूँ. आप लोगों को नहीं अच्छा लगेगा ना, आप लोग कहते होंगे ऑनलाइन ही हमारी क्लासेज हों. Anyhow, let's start the next passage. A big city offers numerous opportunities of job and employment. There are big hospitals and clinics which are equipped with the latest medical facilities. If a person falls ill, he is admitted to the hospital at once. The education facilities in a big city are too many. There are arrangements for the education of the boys and the girls in the city schools and colleges. मैं सिटी स्कूल और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज होती हैं. इफ पर्सन गेट patient or he is sick, so he can admit in the hospital very easily, and he can get the treatment very easily in the hospital. Clear? On the social side, there are theaters, cinemas, and entertainments of all kinds. Even the poorest man can enjoy and entertain himself in a big city. The city people are well aware of the latest trends of fashion in clothes, furniture, and the household amenities of life. They enjoy life in a real sense. The city with a cultural environment broadens their outlook and enriches their vision. इस पेज को पढ़ लें सही से. जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से क्लास. मैं आप लोगों को बता दूंगी. तो भी इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन टेल मी.
Okay, fine. ये पेज क्लियर है. Okay, thank you. Okay, next, all type of people live in a big city. कहते हैं हर तरह के लोग शहर में रहते हैं. Here, poets, scholars, men of letters, and literary people live. They keep up the cultural tone of the city. They important education to the ordinary citizen by their speeches and published work. They, the religious scholar of the real world live in cities and broaden the outlook of the masses with their sermons. Life in a big city is not without its shortcomings, weaknesses, disadvantages. The population of the big city goes on increasing unchecked. It creates many problems. The housing problem confronts every citizen. The rents of the house are very high. Every big city has its slums. Many stories buildings deprive its residents of fresh and healthy atmosphere. Traffic problems has become a great nuisance for everyone in the city. Road accidents are daily happenings very big city. In every big city, the atmosphere of the big city is polluted. Mills and factories emit smoke day and night and polluted the air. People face the problem of overcrowding in homes, bazaars, markets, and on roads. The prices of things of daily use are very high. Pure food is not available easily in cities due to the high cost of living. Everybody has to work very hard day and night. I agree with it that there are so much shortcomings and disadvantages to live in city. Hard work tells upon the health and city people. Yes, everything has advantages and disadvantages, but there are the many things which the advantages is more than the disadvantages. So I think everything has same things. Like there are advantages of the city life, so there are also disadvantages of the city life. But I think the tiredness is a very big factor to live in city life. I don't know why the people are so tired here, including me, to live in a city. There is so hustle and bustle. Maybe the reason of the tiredness is that. What is the reason of tiredness is more in city life. But the people of village are doing more work, I think, than the city life. What do you think about that? Share your ideas, class. तो सीफ को तो पता नहीं कौन सी दो नंबरी मिल गया, हमेशा मुझे यही कहना शुरू कर देता है, सिटी लाइफ के खिलाफ तो बहुत बोलता है। तो सीफ आपने आपके साथ किसी ने क्या दो नंबरी कर दी हुई है, आपके साथ क्या इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ है? आई एम एब्सोल्युटली राइट. ओके. I think people are more actually the health of the villagers are more good than the health of the city people. अच्छा, उसमें क्या होता है कि लोग शायद they eat healthy food और प्योर फूड लेती हैं विलेजर्स जो होती हैं, इस वजह से वो थकते नहीं है मेरे ख्याल से. लेकिन हमारे सिटी लाइफ में तो कोई चीज प्योर होती नहीं है. इवन नो मिल्क नो योगर्ट इज हेल्दी हियर एंड प्योर हेयर. तो इस वजह से शायद हेल्दी फूड नहीं लेते, तो वो फिर हेल्थ इफेक्ट होती रहती है, ये वजह है शायद. स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं. आई थिंक दे ईट ऑल द टाइम प्योर फूड, इस वजह से. यही वजह हो सकती है. हम्म, तो सिर्फ आपके साथ क्या दो नंबरी है, मैंने किसी दिन आपका बैठ कर इंटरव्यू लेना है जरूर. Oh, Saki, I really impressed by your English. Nutrition is most effect.
on us. Okay, let's take the last passage. The people in a big city lead a restless and worried life. Oh, restlessness and worried life. वाकई में बेचारों ने ठीक ही लिखा हुआ है. They are always in a hurry, बहुत जल्दी में रहती हैं. वाकई ऐसे ही होता है. Modern civilization has made them insincere and selfish. अब पता चल गया है क्या हो गया यहाँ पर. मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसलिए लोग जो है वो इनसिंसियर होते हैं, सेल्फिश होते हैं और दोनों ब्री करते हैं. They feel isolated and insecure. There is a kind of strangeness in the big cities. People don't know their neighbors fully well. In spite of all their shortcomings, people feel still like to live in cities. Yes, because of the advantages of the city, but most of the people like to live in the city. The city has to offer them more charm. Yes, such charming life of the city here. हाँ जी. Do you want to ask anything? Class, read it. If you want to ask any question, any meaning, or anything else, so tell me. I will explain every line, every meaning. If you want to ask, so read it. Actually, I agree with that. In the new housing societies, actually, people don't know who is living in the next door or in the neighbor, but oh my. Okay, जी. Yes, many tough meanings are written in Urdu. That's why there is not nothing to ask. Okay, yes, most of the student, not student, most of the people live in the cities here, and they have no time to see the who is living next here. ठीक है, ये क्रिमिनल तो नहीं कहा जा सकता, बट इस क्या कहेंगे कि आपके जो है वो लोग ही ऐसे सिंसियर होते हैं यहाँ पर. दे आर हेल्पिंग. मेरे तो ऐसे ऐसे कोई भी नेबर से पाला नहीं पड़ा जो इस तरह से करती हो या कर सकती हो. लेकिन हमारे तो यहाँ पे नेबर्स बहुत अच्छे हैं और हम भी नेबर सबके बहुत अच्छे हैं, सबका पता है. मैं खुद पर्सनली ऐसी हूँ कि मुझे शायद मैं सारा दिन ही यहाँ पर गुजार देती हूँ, इसलिए मुझे नेबर्स का इतना पता नहीं होता. मेरी मदर घर पे रहती है, उनको ज्यादा पता होता है neighbors ka. So if I am working, so I have no time to see and meet with my neighbors. Yes, if they have problem, they have to tell me. Then I will definitely solve the problem. But really, I have no time to go and ask, "जी क्या हाल चाल है आपका?" or this and that thing. Because I'm a working lady, that's why I spend more time to here, and after that, I want to spend my time with my family. Of course, there are a lot of household works I have to do in very short time. So, and I'm worried about the next day for the job. Might be possible. This is a major reason that neighbors don't know who is living next. So, I don't know. I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ. बस आप लोग नहीं है ना इस वजह से.
निदा बस मीठा मुझसे सवाल पूछती है, मुझे अच्छा लगता है इसका सवाल पूछना कि ये पूछ कहाँ से रही है सवाल। ओके, कल्चरल तो शी इज नॉट इन फैकल्टी ऑफिस। फैकल्टी में नहीं है मैडम रुबीना, कहाँ नहीं है फिर। जी अटेंडेंस हो रही है आपके साथ साथ बच्चों, बल्कि हो ही गई है।
जी क्लास आप लोग अटेंडेंस कितनी फिक्र ना किया करें, आप लोग की हो जाती है अटेंडेंस। अंबर फारूक ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।